So hello everyone. This is your Amitabh sir. I hope all of you are doing well and with your studies, right? And you're preparing well for your exams which are coming on the way. So today I'm going to start a new chapter, System of Particles and Rotational Motion. ठीक है? तो ये आपका chapter number 7 है. Before going further into this chapter, let me just tell you that in this video, I'll be teaching not only completely in English, but I'll be using a bit of Hindi as well, right? मैं यहाँ पे पूरा चैप्टर जो है हिंदी और इंग्लिश में मैं मिक्स्ड करके मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा, राइट? आई होप this video will be very much beneficial to you. If you find any benefit from this video, please do give your feedback. It really helps me a lot. In fact, it motivates me to make more such videos. Okay. So basically, we are going to start this chapter, System of Particles and Rotational Motion. अच्छा, तो इस चैप्टर को शुरू करने के पहले कुछ कॉन्सेप्ट कुछ like key points है जिसको आपको याद करना पड़ता है, right? Like here, if you see, there are 4 points which I've mentioned, so it's better for you to know this point before moving further into this chapter, right? तो सबसे पहले आते हैं यहाँ पे पार्टिकल. पार्टिकल क्या होता है? अगर आप देखेंगे पार्टिकल क्या होता है, a particle is defined as an object whose mass is finite but whose size and internal structure can be neglected. मतलब पार्टिकल क्या होता है? पार्टिकल एक ऐसा चीज होता है जिसके पास तो एक वजन है, राइट? जिसके पास एक वजन है, दैट मींस इट विल हैव मास मे बी ऑफ सम वैल्यूज, बट जिसका साइज, राइट, जिसका साइज और जिसका जो स्ट्रक्चर जो है, इंटरनल स्ट्रक्चर, मतलब वो किस चीज से बना है, उस चीज को मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूँ. दैट इज व्हाट आई मीन एज पार्टिकल, राइट? आई होप दिस इज कंप्लीटली फाइन. And now this particle, right? I hope you understood what is particle. तो particle क्या होता है? Particle एक ऐसा चीज होता है जिसका मास जो है, जिसका मास finite होता है, right? That means measurable height, measurable mass, I'm so sorry, measurable mass. और जिसका size क्या होता है? जिसका size और internal structure को मैं neglect करता हूँ. Okay, that's fine. अभी आते हैं, उसके बाद आते हैं हम लोग, अभी ये particles, जब बहुत सारे particles एक जगह पे आ जाते हैं, right? Now what happens now? Right, now there are number of particles which are in a given area or given region, right? And these particles, they are interacting with each other. When I say interacting ka matlab, they are attracting each other, maybe they are repelling each other, right? Maybe they are colliding with each other, they are moving away from each other, right? So many things can happen. That's what I mean by interaction, right? तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है? जब बहुत सारे particles, right, huge number of particles, as you can see the definition of system. A system is a collection of very large number of particles which mutually interact with each other, right? तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग इसको सिस्टम बोलते हैं, राइट? आई होप दिस इज कंप्लीटली क्लियर. तो सिस्टम क्या होता है? सिस्टम एक ऐसा जगह होता है जहाँ पे सारे पार्टिकल्स क्या होते हैं? सारे पार्टिकल्स अपने आपस में क्या होते हैं? आपस में वो लोग म्यूचुअली इंटरेक्ट करते हैं, राइट? सो दैट इज व्हाट सिस्टम एक्चुअली मीन्स. ओके, now we come to our next part, and that is my internal forces. अब ये internal forces क्या होता है? Just look at this, the mutual forces exerted by the particles of a system on one another. जैसे मैंने आपको बोला था, दो particles के बीच में ये क्या हो सकता है? Attraction हो सकता है. दो particles के बीच में repulsion हो सकता है. Now one particle may collide with another particle and then it may exert a force on that, right? तो वही सेम चीज. तो म्यूचुअल फोर्स एक्सर्टेड बाय द पार्टिकल्स, मतलब आपस में जो एक दूसरे के बीच में जो एक फोर्स होता है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है, वो फोर्स ऑफ रिपल्शन हो सकता है. तो that mutual force, right, that mutual force between the particles, right, between the particles of a system, we call that as internal forces. So internal word का मतलब होता है something from inside, right? Okay, I hope this is clear. Then we move to the next part. Next part we have the external forces. Now what is this external force now? अभी ये तो था हमारा अंदर वाला चीज, right? It was from inside, that means it was from the internal part of the system, right? Now suppose for example some external agency. External agency का मतलब बाहर से कोई भी चीज. It may be a person, it may be a machine, it may be any device, right? It may be a compressor, it can be plenty of things, right? There are plenty of things, plenty of external agencies, right? Okay. So abhi suppose for example एक system, right? Now this is the system, this box is a system, right? Okay. अभी इस सिस्टम पे क्या हो रहा है? बाहर से कोई आके, राइट, समवन फ्रॉम आउटसाइड इज ट्राइंग टू एक्सर्ट सम फोर्स, राइट, एंड दैट थिंग विच फ्रॉम आउटसाइड वी विल कॉल इट एज एन एक्सटर्नल एजेंसी. जब कोई चीज बाहर से आके, राइट, बाहर से आके उसके ऊपर फोर्स डालता है, राइट, तो उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज एक्सटर्नल फोर्स. वी आर गोइंग टू यूज दिस इन डिटेल, सो दैट्स व्हाई हम मैं सब चीजें क्लियर कर ले रहा हूँ आप लोगों से.
सो सच फोर्स चेंजेस द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट. उस ऑब्जेक्ट का क्या कर सकता है, उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी को वो चेंज कर सकता है, राइट. आई होप दिस ऑल दिस 4 पॉइंट्स आर क्लियर, राइट. अगर आपको लाइक इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन, आई जस्ट क्लीन दिस अप एंड मे बी यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, राइट. सो I would ask you to please pause the video and note this down. So now we are going to start the actual part of this chapter. अभी ये जो हमारा सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ मास आया कहाँ से? मैं आपको एक चीज बता देता हूँ उससे पहले, before going deep into this, right? आप सभी को you already know because you're studying physics, so definitely you should know this person, right? Sir Isaac Newton, right? Sir Isaac Newton, all of you know about this person, right? Very huge pioneer of physics, right? Okay. So what happened actually? Sir Isaac Newton, आपको पता है Sir Isaac Newton ने 3 laws दिए थे, right? Laws of motion. Now these laws of motion, right? They are applicable only to point objects. क्या बोला मैंने? These laws of motions are applicable only to point objects, right? तो अभी जैसे कि आसपास में तो बहुत सारी चीजें हो सकती है which might not be of point size, right? When we study out of the dimensions, right? So actually to मतलब आइजैक न्यूटन के लॉज के साथ रिलेट करने के लिए ये सेंटर ऑफ मास का एक कॉन्सेप्ट था, राइट. नाउ दिस इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास, इट enables us to apply them equally to this laws of motion, right? Okay. अब ये सेंटर ऑफ मास होता क्या है? देखो एक बॉडी को पकड़ लो, एक इतना बड़ा एक बॉडी, राइट, इतना बड़ा एक बॉडी है, डेफिनेटली दिस इज नॉट ए पॉइंट ऑब्जेक्ट, राइट. ओके. तो अभी आप अगर देखोगे इसका मास जो है, राइट, द मास ऑफ दिस एंटायर बॉडी मे बी कंसंट्रेटेड टू वन पर्टिकुलर पॉइंट, राइट. मास तो इसका पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, बट देयर विल बी अ पॉइंट वेयर दिस एंटायर मास ऑफ द बॉडी इज गोइंग टू बी कंसंट्रेटेड, राइट. ओके. मतलब उस पार्ट को अगर मैं वेट करूं, if I weigh that particular part, I might get the entire mass of that particular body. इसका मतलब ये नहीं कि मैं इस entire body को मैं टुकड़ों में बांट दूंगा and then I'll just take out that portion. That is not applicable. Okay. मुझे क्या करना है, इस एंटायर बॉडी को जब मैं वे करूंगा, राइट, एंड राइट, द एंटायर मास ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉडी विल बी कंसंट्रेटेड टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट, राइट. तो उसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास. तो सेंटर ऑफ मास क्या हो जाता है, अगर आप देखेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ पार्टिकल इज दैट सिंगल पॉइंट. वो उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं which moves in the same way in which a single particle having total mass of the system acted by the same external force would. मतलब इसका मतलब क्या है, मतलब मेरे पास एक बॉडी है, साउंड द डेफिनेशन में साउंड वेरी कॉम्प्लिकेटेड, मेरे पास एक ये है, राइट. अभी आप सोचो इस बॉडी को मूव करने के लिए, राइट, देयर विल बी सो मेनी पर्संस, दे विल बी पुशिंग दिस, राइट. अ फोर्स, अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ फोर्स विल बी एक्टिंग ऑन इट, राइट. ओके. तो certain amount of force will be acting upon this particular body to move this particular body through the system, right. Okay. Suppose for example इस बॉडी को मूव करने के लिए मेरे 100 न्यूटन मैंने डाला, चलो 100 न्यूटन फोर्स, आई एम अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन एंड देन आई एम मूविंग दिस पर्टिकुलर बॉडी, राइट. नाउ दिस पॉइंट, आई मीन सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे अगर मैं 100 न्यूटन, just in that particular point, if I apply 100 Newton of force, it will be covering the same distance with that same extent of force. So that's what center of mass. मतलब in short, अगर मैं इसको मतलब बोलना चाहूँ, right? If I try to describe it in a short way, it means that it is a point where the mass of the entire body is concentrated. ठीक है, चलिए. तो center of mass, what is the center of mass? Center of mass of a system of particle is that single point, right? Where the whole mass of the body is supposed to be concentrated. Okay, so I hope this is completely clear to you. अभी हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा सेंटर ऑफ मास का ना थोड़ा सा क्या बोलते हैं इसका एक एक्सप्रेशन निकालने की कोशिश करते हैं, राइट. बट बिफोर दैट लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू लिटिल बिट अबाउट वेटेड मीन, राइट, वेटेड एवरेज मीन. अब ये वेटेड एवरेज मीन क्या होता है? सपोज फॉर एग्जांपल मेरे पास बहुत सारे ऑब्जर्वेशन, ये चीज आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, मैं हल्का सा मैं इसका सिर्फ एक ब्रीफ डिस्कशन में देता हूँ, ठीक है. सपोज फॉर एग्जांपल आप लोगों को मिला होगा, राइट, मैथ्स में मिला होगा, स्टैटिस्टिक्स वगैरह में आप लोगों ने पढ़ा होगा, राइट. मेरे पास ऑब्जर्वेशन है, आई हैव गॉट ऑब्जर्वेशन x1, आई हैव गॉट अनदर ऑब्जर्वेशन x2, आई हैव गॉट अनदर ऑब्जर्वेशन x3, राइट. ओके, मेरे पास तीन ऑब्जर्वेशन है, x1, x2, x3, राइट. And the weight associated with x1 is w1, the weight associated with x2 is w2, the weight associated to x3 is w3. That means these are the values associated with the different observations, right? तो मुझे क्या करना है, मुझे इसका weighted average mean निकालना है, right? तो when I find out the weighted average mean
एवरेज मीन हम उस चीज का निकालते हैं जहाँ पे ऑब्जेक्ट का नंबर जो होता है ना बहुत ज्यादा होता है, राइट। ओके, सो एक सिस्टम में तो बहुत सारे पार्टिकल्स हो सकते हैं, राइट। देयर में बी 2 पार्टिकल्स, देयर में 3 पार्टिकल्स, देयर में बी 100 पार्टिकल्स, देयर में लैक्स एंड लैक्स ऑफ पार्टिकल्स, राइट। सो इसीलिए हम लोग यहाँ पे वेटेड एवरेज मीन हम लोग अप्लाई करते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स सी हाउ टू फाइंड आउट द वेटेड एवरेज मीन, राइट। वेटेड एवरेज मीन का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। वेटेड एवरेज मीन का फॉर्मूला होता है, right, it is equal to nothing but w1 product of w1 plus x1 w2 plus x2 into w2 plus x3 divided by the total weights. That means w1 plus w2 plus w3. I hope this is clear. इसको अगर मैं शॉर्ट में लिखना चाहूँ, if I try to write it in the form of summation, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, summation, right, wi xi, और ये i का वैल्यू कहाँ से जाएगा, i का वैल्यू 1 से शुरू होगा और 3 पे जाके खत्म हो जाएगा, राइट। ओके, in this case, right, in this case, and then summation wi, right, और i का वैल्यू 1 से लेके 3 तक। सपोज फॉर एग्जांपल इफ इट वाज फॉर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, n पार्टिकल्स, अगर ये n पार्टिकल्स तक होता, दैट मींस दिस वुड हैव गॉन टिल n, राइट, wn। तो यहाँ पे होता क्या, इन दैट सिचुएशन यहाँ पे दिस 3 वुड हैव बीन रिप्लेस्ड विद n, this 3 would have been replaced with n. Okay, so this is the basic concept of weighted average mean. चलिए, तो अभी यहाँ पे हम लोग जो सेंटर ऑफ मास का जो कॉन्सेप्ट पढ़ने जाएंगे, राइट, आई एम जस्ट इरेजिंग दिस। सेंटर ऑफ मास का अगर मुझे कॉन्सेप्ट अगर पढ़ना है तो मुझे क्या करना होगा, मुझे एक सिस्टम कंसीडर करना होगा। तो उस सिस्टम में पहले मैं दो सिस्टम वाले पार्टिकल्स को मैं पढ़ूंगा, ठीक है। सेंटर ऑफ मास फॉर अ सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल्स। जस्ट अ सेकंड, लेट मी जस्ट रीड द इंक कलर। या ओके, दैट्स फाइन नाउ। तो सपोज फॉर एग्जांपल मैं एक काम करता हूँ, राइट, I'm drawing a Cartesian coordinate system, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैंने बना दिया है, राइट। I've just created a frame of reference. This is going to be my x axis, this is going to be my y axis, right, this is going to be my origin, right। अच्छा, so there are two particles, there are 2 points, and उस 2 points पे जो particles है मेरा, right, these are the 2 points, point P1 and this is another point P2, right, and there are 2 particles, right। Okay, चलो, तो अभी यहाँ पे आप देखिए, so yeah, now the position vector of this particular point is r, इसको मैं r1 पकड़ लेता हूँ, should I take it as r1? Okay, it doesn't make any difference. r1, the position vector of this one is r1 and the mass of this one is m1, right? Okay, and then this one, I'll draw another point over here, right? Okay, मैंने यहाँ पे और एक point draw किया, the position vector of this one is r2 and the mass of this particular particle at this point is m, right? चलो ठीक है, तो अभी, right, this is the system, okay, and I'm drawing a line. Suppose for example this is the center, this is the point, right, यही point है, इसी point को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी point को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ मास, इसी point को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी point को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। सपोज फॉर एग्जांपल इसका जो पोजीशन वेक्टर है, इसके पोजीशन वेक्टर को मैं लिखता हूँ कैपिटल आर सी एम, वेक्टर साइन दे देता हूँ ऊपर, राइट, एंड दिस इज द पॉइंट वेयर, राइट, द एंटायर मास ऑफ द सिस्टम, राइट, entire mass of the system is concentrated, right, और इस सिस्टम में कितने मास पार्टिकल्स हैं, there are 2 particles, one at P1 and दूसरा वाला कहाँ पे है, P2 पे। okay, that's completely fine। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। so in that case, right, in that case that center of mass, right, center of mass का जो position vector है, right, उसी चीज को मुझे पढ़ना है, right, center of mass C जो है उसका जो position vector है, right, and that position vector is represented by RCM, वेक्टर साइन ऊपर दे दिया, इज नथिंग बट इट इज द वेटेड एवरेज मीन। तो वेटेड एवरेज मीन, राइट, वेटेड एवरेज मीन ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्टिकल, राइट, ऑफ दैट पर्टिकुलर सिस्टम। तो वेटेड एवरेज मीन यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, m1 into r1 वेक्टर प्लस m2 into r2 वेक्टर, राइट, बाय m1 plus m2। ओके, सो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस वेटेड एवरेज मीन। सो ये इक्वेशन क्या दिखाता है हमें, ये इक्वेशन दिखाता है कि द पोजीशन वेक्टर of the system of particles is nothing but it is the weighted average mean of the position vector of the particles, right, making the system, right। तो अभी suppose for example अगर यहाँ पे 3 particles होता, तो 3 particles होता तो क्या हो जाता, I would have added here m3 r3 vector, right, I hope you understand, right, और नीचे में एक और एक m3 डाल देता। okay, so you have to remember this। same अगर यहाँ पे 4 particles होता तो I would have written it like this, r4 vector
प्लस यहाँ पे मैं डाल देता और एक M4 में डाल देता. सो आई होप दिस शुड बी कंप्लीटली फाइन. मैं यहाँ पे आई जस्ट कंसिडर इट फॉर 2 पार्टिकल्स, राइट? इफ यू वांट टू कॉपी दिस डाउन, जस्ट पॉज द वीडियो. ओके, जस्ट पॉज द वीडियो एंड देन नोट दिस डाउन. ओके, दैट्स ग्रेट. चलिए, तो अभी यहाँ पे आते हैं. नाउ सपोज फॉर एग्जांपल इस पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट हो जाए. ओके, नाउ आई एम ट्राइंग टू इंक्रीज द कॉन्सेप्ट. ध्यान से देखिए आप लोग. अगर मैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट को पकड़ लूं x1, y1 और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट को पकड़ लूं x2, y2, राइट? तो क्या किया मैंने 2 पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट मैंने पकड़ा. एक को पकड़ लिया मैंने x1, y1, दूसरे को पकड़ लिया मैंने x2, y2. ओके, दैट्स कंप्लीटली फाइन. चलिए, तो यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट्स का जो आई मीन सेंटर ऑफ मास, राइट? सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट होगा, व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट फॉर देम? दैट मींस x cm, राइट? सपोज इसका कोऑर्डिनेट है x cm, y cm. तो x cm का क्या हो जाएगा? x cm विल बी इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 by, राइट? मैं यहाँ पे वेक्टर सेट देता हूँ बिकॉज इट्स अ कोऑर्डिनेट, राइट? ओके, सो लेट्स नॉट पुट एनी कंफ्यूजन हियर. तो यहाँ पे आ जाएगा ये चीज. और अगर y का मुझे कोऑर्डिनेट निकालना था तो दैट मींस इट वुड हैव बीन m1 y1 प्लस m2 y2 by m1 plus m2. I hope this is completely clear. आप सभी को समझ में आ गया, राइट? तो ये चीज था. तो दिस वाज बेसिकली सेंटर ऑफ मास फॉर अ सिस्टम फॉर 2 पार्टिकल्स. मतलब 2 पार्टिकल्स जब होता है तब सेंटर ऑफ मास कैसा होता है. सो दिस इज द थिंग. आई होप दिस इज कंप्लीटली क्लियर, राइट? चलिए, तो इट्स बेटर फॉर यू टू पॉज द वीडियो एंड नोट दिस. अभी तो ये था हमारा फॉर 2 पार्टिकल्स. नाउ वी आर गोइंग टू डू द सेम स्टडी फॉर n पार्टिकल्स. n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए इस चीज को हम लोग हल्का सा पढ़ेंगे. सपोज अगर यहाँ पे अगर पार्टिकल्स, अगर देयर आर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तब क्या होता है? व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट? इन दैट केस द कोऑर्डिनेट इज गोइंग टू बी, लेट मी जस्ट राइट दिस डाउन समवेयर हियर. इस चीज को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. थोड़ा सा हल्का सा मैं ऊपर लेके जाता हूँ इस चीज को, राइट? सपोज फॉर एग्जांपल इफ द पार्टिकल हैज n number of if the system has n number of particles, in that case the coordinates are going to go where? ये जाएगा पूरा n तक जाएगा, mn xn, राइट? ओके, प्लस ये कहाँ तक जाएगा? m तक, mn तक जाएगा. ओके, सेम दिस वन इज गोइंग टिल वेयर? टिल mn yn फॉर n particles. रिमेंबर, n particles के लिए, राइट? mn. ओके, आई होप दिस इज कंप्लीटली फाइन. ओके, सो दिस इज द सिनेरियो. इसी चीज को मैं थोड़ा सा अगर मैं प्रॉपर्ली अगर मैं लिखना चाहूँ, राइट? इफ आई ट्राई टू राइट इट इन अ वेरी प्रॉपर वे, मैं काम करता हूँ ये ऊपर के आसपास की चीजों को मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, राइट? ओके, सो इफ आई ट्राई टू राइट इन अ वेरी प्रॉपर नोटेशन, ये क्या हो जाएगा? जस्ट लुक एट दिस. दिस बिकम्स समेशन mixi, राइट, बाय कैपिटल M. अब यहाँ पे मैंने कैपिटल M क्या होता है मैं आपको थोड़ी देर बाद समझाने जा रहा हूँ. दिस बिकम्स समेशन miyi by capital M. Now what is capital M? By the way, capital M is equals to total mass of the system. ये चीज आपको याद रखना है. Capital M का मतलब होता है total mass of the system, right? And what is the total mass of the system? If there are n particles, that means it will be m1 plus m2 plus so on up to mn. Okay, so I hope this is completely fine, right? So this is what the total mass of the system basically means, right? चलिए, तो ये हो जाता है हमारा फॉर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स. इफ देयर इज अ z कोऑर्डिनेट, अगर यहाँ पे हम लोग अभी अगर 3 डायमेंशन में इसको पढ़ना है तो z कोऑर्डिनेट अगर होता तो इट्स गोइंग टू बी व्हाट? m2 y2 प्लस सॉरी माय बैड, इट्स नॉट दिस. यहाँ पे क्या हो जाता? दिस इज गोइंग टू बी m1 z1 प्लस m2 z2 प्लस सो ऑन अप टू mn zn बाय क्या लिखूंगा मैं? m1 प्लस m2 plus so on up to mn. Okay, तो मैंने यहाँ तक इस चीज को लिख दिया, राइट? सो इफ आई ट्राई टू राइट इट इन दैट समेशन वाला नोटेशन, समेशन नोटेशन अगर मैं इसको लिखने की कोशिश करूँ, सो इट्स गोइंग टू बी mizi by capital M, right? I hope this is completely clear to all of you, right? सभी को ये चीज समझ में आ गया, right? Now ये कब होता है? ये जब पार्टिकल डिस्क्रीट का मतलब होता है when I can distinguish the particle. एक पार्टिकल मैं जब distinguish कर सकता हूँ, in that scenario I'm going to use this formula. But अगर मेरा पार्टिकल अगर कंटिन्यूअस हो जाए, कंटिन्यूअस का मतलब होता है you can't distinguish the particle. That means एक पर्टिकुलर लाइन पे बहुत सारे masses पड़े हुए हैं, right? And you can't distinguish where are the masses located, right? The particles are very smooth and very small. That means when the body has a continuous mass distribution, जब बॉडी का मास कंटिन्यूअस हो जाए, राइट?
when the mass of the body is continuous. तो अभी तक मुझे क्या फॉर्मूला मिला? I got the formula S, right? I got the formula something like this, right? X कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला मुझे क्या मिला? समेशन MIXI by capital M, right? Okay, Y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या मिला मुझे? It is YIXI by capital M. I hope this is also fine. And Z axis का मुझे क्या मिला? समेशन ZIXI by capital M, right? Okay. Now, if the particles have a continuous mass distribution का मतलब होता है something which is not discrete. So when something is not discrete, what will happen? What am I going to do? The summations are going to be replaced by integration. Now, remember one thing. जब continuous mass distributions होगा, what will happen? The particle, ये तो x रहेगा, mass तो बहुत छोटा हो जाएगा in that case because the particles are very small now, right? Masses are very small, so it will be what? X dm. जैसे कि सेम यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? Y will become what? Y is going to be sorry, ये वाला पार्ट जो था समेशन YIXI क्या हो जाएगा? समेशन YIXI और YX, राइट? जस्ट अ मिनट, क्या लिखा मैंने यहाँ पे? मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया. Okay, please forgive me. I've just made a mistake here. I'm just trying to make the video very raw, not at all edited and all, right? So that like you understand, right? I'm just trying to create a real class environment. Okay, so yeah, okay. तो यहाँ पे आप एक चीज देखिए, यहाँ पे समेशन ये क्या हो जाएगा? समेशन y sorry my, let's write it like this, my. Summation my will become what? Will become integration of y dm. Okay, integration. Summations are going to be replaced with integration. Masses are going to become small, right? Continuous mass distribution. Okay, and summation zm या फिर mz is equal to, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा zdm, right? I hope this is all fine, right? तो ये हो जाता है हमारा पूरा इंटेंट. Then how will the coordinates look this time? तो कोऑर्डिनेट्स तो देखो, ये चीज जो है ये इंटीग्रेशन बन जा रहा है, एंड देन दिस m will still be there, so that means it will become 1 by m summation x dm. चलिए, x कोऑर्डिनेट मेरा निकल गया. y क्या हो जाएगा? सो y हो जाएगा हमारा 1 by m summation y dm, राइट? और z कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? z कोऑर्डिनेट विल बी अगेन 1 by m summation z dm. Okay, so let's do a quick recap of what we have studied. अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? सबसे पहला चीज, आज के वीडियो में हम लोगों ने क्या चीज पे फोकस किया? पहले मैंने 4 टॉपिक्स पे मैंने फोकस किया था. पहले था हमारा पार्टिकल्स. पार्टिकल्स क्या होता है? पार्टिकल्स एक ऐसा चीज होता है जिसका मास जो होता है वो फाइनाइट होता है, बट आई कैन नेग्लेक्ट इट्स साइज. ओके, साइज एंड पोजिशन को मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूँ. एंड देन द नेक्स्ट वन वाज सिस्टम. सिस्टम क्या होता है? जहां पे बहुत सारे पार्टिकल्स आपस में इंटरैक्ट कर रहे होते हैं, राइट? इट्स अ प्लेस वेयर number of particles they interact between each other. We call that particular thing as a system. उसके बाद आता है दो टाइप्स के फोर्स हम लोगों ने पढ़ा. एक था हमारा इंटरनल फोर्स और दूसरा था हमारा क्या था? एक्सटर्नल फोर्स, राइट? दूसरा था हमारा एक्सटर्नल फोर्स. ओके, चलिए बढ़िया. देन आई एक्सप्लेन यू समथिंग अबाउट सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ मास क्या होता है? सेंटर ऑफ मास इज द पॉइंट where the mass of the entire solid is supposed to be concentrated. And center of mass का अगर position vector RCM हो जाए तो that means for a two particle system it is going to be R1 M1 plus R2 M2 by M1 plus M2. अगर उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, if the coordinate of that point is x1, y1, okay, in that case sorry x, y, अगर उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाए तो you know what happens, right? That means x कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है? x कोऑर्डिनेट will be equal to m1 x1 plus m2 x2 by m1 plus m2. And then what is the y coordinate? Y coordinate will become m1 y1 plus m2 y2 by m1 plus m2. Okay, now for n particles, right? तो n particles के लिए क्या हो जाएगा? Okay, for n particles it will become what? For n particles it will be x का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? summation mixi by summation m. summation m को मैं कैपिटल MP में लिख सकता हूँ. ओके, एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ y will become summation mi by कैपिटल M. ओके, आई होप दिस इज कंप्लीटली फाइन. ओके, तो ये था हमारा व्हेन द पार्टिकल्स आर डिस्क्रीट. जब मेरा पार्टिकल डिस्क्रीट हो तब ये चीज होता है. एंड व्हेन द पार्टिकल इज कॉन्टिन्यूअस फॉर कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन.
कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, यही सेम चीज क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, पर कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन एक्स का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 1/m को मैंने बाहर लिख दिया, कुछ नहीं, नथिंग सो डिफिकल्ट। यहाँ पे मैंने लिख दिया एक्स डी एम, राइट, एंड दिस वाई का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 1/m इंटीग्रेशन वाई डी एम। अगर मेरे पास z होता है, that means if it's a three-dimensional thing, there will be a z coordinate as well. So that means this will become z dm. I hope you understood this video, right? I hope this video was completely beneficial to you, right? If you have any queries or if you could not understand, want to make this video a really better thing, please make sure you comment down in the comment section below, right? So hope to see you in the next video. Thank you very much. Keep studying. Yeah, take care.